Innovate. Enable. CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2016 हैदराबाद फोरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस शहर में हम एक बार फिर हाजिर हैं जहां के रियल एस्टेट के हम हमेशा से कायल रहे हैं। बहुत ही शानदार मार्केट, और आज भी जबकि देश में परिस्थितियां बहुत सामान्य हम नहीं कहेंगे, चाहे किसी भी स्थिति के हिसाब से आप उन्हें माने, ये मार्केट अच्छा कर रहा है और आज यहां आकर भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हैदराबाद के रियल एस्टेट मार्केट में और वो तमाम फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं या इस समय नेशनल सिनेरियो को अफेक्ट कर रहे हैं, उन पर बातचीत आज हम करने जा रहे हैं। और हमारे साथ एक बेहद ही शानदार पैनल इस वक्त मौजूद है। इस पैनल को मैं आपसे तारुफ करा देता हूं कि कौन कौन हमारे साथ इस पैनल पर हैं। सबसे पहले सी शेखर रेड्डी साहब, इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट क्रेडाई नेशनल और CMD CSR स्टेट्स। उसके अलावा हमारे साथ हैं जी रामारेड्डी साहब, प्रेसिडेंट क्रेडाई तेलंगाना, MD ARK इंफ्रा। हमारे साथ है पंकज कपूर साहब, MD लाइसेंस फोरास द रिसर्च फर्म। हमारे साथ है बालचंद्र धर्मेंद्र साहब, डायरेक्टर RR ग्लोबल, और UNN माइया साहब, जनरल मैनेजर हैदराबाद सर्किल फ्रॉम SBI। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शेखर रेड्डी साहब आपसे ही शुरुआत करते हैं। हैदराबाद एक ऐसा मार्केट है, जैसा मैंने कहा भी शुरुआत में, कि इस समय जो देश में पूरी स्थिति है, हम बहुत अच्छा नहीं मान रहे रियल एस्टेट में। वैसे ही काफी कुछ खराब था सिनेरियो, और डीमोनेटाइजेशन हुआ, कुछ और चीजें हुई जिससे फिलहाल परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं की जाएगी। लेकिन जो आंकड़े हमें कुछ नजर आए, हमने देखा कमर्शियल एक्टिविटी या रेजिडेंशियल भी हैदराबाद बेहतर कर रहा है। क्या कारण है? Basically, Hyderabad is from the 2006 onwards, we have taken up a very revolutionary policy. Nobody could dare enough to take that policy. The entire Asia. We have no FSI here. Plenty of land is available because of the war, and land cost also compared to others. Tier 3 cities also, our land value is very less. And affordable, we always hear affordable housing. But the real definition, if you see the Hyderabad, is we have the affordable housing here. Affordable housing is there because of the policies, our taxation, and the ease of doing business. So our CM सारे फैक्टर्स मिलाकर आप कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हुआ। रामारेड्डी साहब, जैसा जिक्र किया शेखर रेड्डी साहब ने भी कि तेलंगाना, और ये इशू हम जानते थे जो आपके यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस था, अब वो जो पॉलिटिकल इशू है पूरी तरह सॉल्व हो चुका है। तो क्या ये उसका आफ्टर इफेक्ट भी है, क्योंकि तब तक सब कुछ रुका हुआ था, अब वो चीजें सॉल्व हो गई तो इस मार्केट को एक नया पुश मिल गया। क्या ये भी एक कारण है कि बाकी चीजें हमने कहा उतनी अच्छी नहीं है देश में, लेकिन हैदराबाद को एक अलग ही जगह मिल गई? Yeah, Vipin, you are absolutely right. There was almost 4 to 5 years because of Telangana issue. Hyderabad market was so dull. Once the new government has formed and under the leadership of KCR and KTR, I mean, their dynamism shows the results are, I mean, 2014 it started and 2015 it has given a best results. Now everybody is confident about Hyderabad. So everybody has got, entire Hyderabad people have got the confidence in this government. That created a lot of, that it followed by a lot of investments. You look at the MNCs. All the big MNCs across the globe are looking at Hyderabad. They are establishing their best offices, second best offices in Hyderabad. So this is, created just because of the, positive government, proactive government, and people's confidence has been increased. So this is how even other cities, major developers also coming to Hyderabad. They already started their projects. So that is, biggest advantage for Hyderabad. तो ये हमारे दोनों जो डेवलपर साथी हैं उन्होंने अपनी बात रखी। अब इसको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पर तोल लेते हैं। पंकज साहब, वैसे जहां तक मुझे लग रहा है जो बातें बता रहे हैं वो सही है, लेकिन एक बड़ी सही बात बोली शेखर रेड्डी साहब ने कि जो लैंड के प्राइसेस हैं शहर में वो आज भी कम है, और यही कारण है कि आप लोग 3000 और इस तरह के भाव में बेच पाते हैं। क्या कारण है उसका? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, ये एक बड़ा रोल मॉडल की तरीके से आ सकती है, क्योंकि आज अगर हम दूसरे शहरों की बात करिए कि जहां लैंड प्राइस ही अनप्रोडक्टिव हो गए, आज के जो मुंबई हो, NCR हो, बैंगलोर हो, इवन चेन्नई है, आप वहां पे अगर आज के प्रिवेलिंग लैंड प्राइस को के ऊपर आप अगर कोई डील करते हैं और जो वहां के अपार्टमेंट का प्राइस है और उसके ऊपर जो वेलोसिटी चल रही है, आप देखेंगे कोई भी प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। तो ओवरऑल स्पेकुलेशन अक्रॉस इंडिया अगर जो हुआ वो लैंड के अंदर हुआ,
और जिस तरीके की ग्लोबल एफएसआई का जो रिजिम यहाँ पे था कि आप रोड विथ छोड़ेंगे और आप उसके मल्टीपल में ऊपर जा सकते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा सा मॉडल था जो बड़ा ही लैंड एफिशिएंट मॉडल है। ये लैंड में एफिशिएंसी लाता है और यही कारण हुआ कि लैंड प्राइसेस मॉडरेट रहे तो भाव ऊपर नहीं बढ़े। अगर आप इकोनॉमिक आउटलुक का भी डेटा देख लीजिए 2006-2007 में और 2005 से 2008-9 और उसके बाद जो है ड्वेलिंग यूनिट का प्रोडक्शन कम होता चला गया, हालांकि प्राइजेस जो है वो 3 गुने हो गए सारे शहरों के अंदर। इस पीरियड में बिकॉज ऑफ द तेलंगाना इशू जो स्पेकुलेशन नहीं हुआ और ये प्राइजेस में जो एक पैरिटी बनी रही और उस तरीके का स्पेकुलेशन नहीं है, उसका बेनिफिट है। तो मुझे लग रहा है कि एक शहर है जिसका समय अब आ गया है और उसका समय इसकी एफिशिएंसी के हिसाब से भी आया है, और दूसरा जो रिमेनिंग इकोनॉमी की इनएफिशिएंसी है वो इधर पोलराइजेशन। बहुत अच्छा टर्म यूज किया आपने कि इस शहर का समय अब आ गया है। धीरेन्द्र साहब, आपका क्योंकि वायर का कामकाज, हम आपके पैरामीटर पे अब देखते हैं रेस्ट ऑफ द इंडिया आपके ऑर्डर्स और हैदराबाद के ऑर्डर्स और सारी अर्निंग्स, उस हिसाब से आप सिटी को कहाँ रेट करेंगे? कैसी एक्टिविटी चल रही है रियल एस्टेट में यहाँ पर? If you look at from a perspective of a manufacturer, I think the last, just as Mr. Shekhar Reddy also explained, the last 18 months there has been a big upswing. But if you look at the period before that, almost 4 years, there's been a lot of pent-up demand. Actually, work was happening, but from our end, we are just waiting for something to happen. Going forward, now the upswing is there, and we hope, because with inventory levels going at a very low level, so going forward for us, we are looking at the supply position not slipping. The important thing is whatever we are seeing now in Hyderabad, that's the impact of the forward-looking steps that were taken probably about a decade ago by the policymakers. That we are meeting all those demand now. But now what we are looking at from a manufacturer's perspective is to look at the next big jump. Because for us to ramp up facilities, it's not only for just for Andhra alone or the Twin City alone, but overall for any manufacturing concern to get into the phase of supply, we need gestation period. So we are hoping that policy initiatives that come up now with the new government, which has already been is in place, rather than looking at feeding today's market, look at the next 5 years, look at next 10 years, because that is going to give the next big jump. In 2 years' time, when metro is up and running, decongestion that has been spoken on many forums across the country, I think it has been best implemented in Hyderabad. फ्यूचर पर्सपेक्टिव आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें पॉलिसीज काफी इंपॉर्टेंट होंगी। माहिया साहब, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन लोग आते हैं आपसे लोन लेने के लिए, कितने लोन ले रहे हैं और किस ब्रैकेट में सबसे ज्यादा डिमांड है? मैं हैदराबाद स्पेसिफिक अगर आपसे पूछूं तो आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं इस समय मार्केट को लेकर? See, we at State Bank of India, we have been encouraging the home loans, and we have been continuously growing in all the segments. But after that, just after the demonetization, there is a little bit of lull in respect of luxury houses. But the first-time buyers, the users, basically those who buy for the house first time, definitely there is a steady market. There is no increase, but there is a kind of wait and watch. People are thinking, the housing prices may go down further, or people are perhaps expecting further reduction in the interest rate. In fact, the interest rate on home loans have already been consistently low. Even earlier also it was low, but now, especially after demonetization, after getting so much of cash into the banking system, we were the pioneer in reducing the MCLR, the marginal cost of lending rate, what we call. We have reduced it by 90 basis points. Now we have one of the best MCLR in the banking industry. Despite that, people are still hesitant. We are not getting that kind of a demand, which is people are waiting and watching, and perhaps they may expect that some more reduction will happen in the interest rate, and also they are expecting further reduction in the prices. In the long run, going forward, I look a very positive aspect for this. There will be stability. There will be more transparency in the entire the housing portfolio. Right. शेखर रेड्डी साहब, जो डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं माहिया साहब, और
वाकई में ये देखने में आ रहा है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए। हमको भी टीवी पे कई सारे सवाल आते हैं कि ये डीमोनेटाइजेशन हो गया है, अभी इन्वेस्ट किया था तो क्या करें, निकल जाए, या आगे नया करें कि नहीं, घर खरीदें कि नहीं। इंटरेस्ट रेट भी जैसे अभी बोला कि एक रिडक्शन आ गया 50 बेसिस पॉइंट का, तो एसबीआई ने ही दिया। अब लोगों को लग रहा है और रिडक्शन आएगा, बजट भी आने वाला है, तो बड़े कंफ्यूज हो गए लोग। हैदराबाद के हिसाब से क्या रहेगा, कैसे उसको लोग समझे, कैसे उसको देखें? From the day one of demonetization, we are going to most of the TVs here. So we are saying only thing is demonetization is a reform. We are welcoming it. For the last 30 years we have been working on the reforms. We welcome it. But this is not the only solution for whatever they have sold. So many reasons is not the only solution. इसका क्या है हमारे को, इसमें जब पैसे बैंक आ रहा है, बैंक में पैसा रहेंगे तो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देना. So definitely our rate of the deposit rates will come down, the lending rate will come down. That will help us. And part of the entire process, whatever the benefit is there, Prime Minister said we'll pass it on to affordable housing. I was saying कि अगर बिल्डर आगे बढ़ करके अगर केवल 10 से 13% ही अगर भाव आज के दिन कम कर दें तो कंप्लीट पैरिटी हो जाए, और ये पैरिटी होगी तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1 ईयर में आज की सेल्स का डबल हो जाएगा इस मार्केट के अंदर. हो सकता है रामा रेड्डी साहब, अगर इसमें आपको इंक्लूड करूं, जो कह रहे हैं कि उतना आपका होम लोन कम हो गया, अब अगर इधर से भाव कम हो जाए, बट इज देयर एनी स्कोप टू डू दैट? ऐसा हो सकता है, क्या करेंगे आप? हैदराबाद में तो नहीं, definitely नहीं, because we are already selling at rock bottom prices. Past several years we have faced lot of problems. Just only market picked up and people are buying the homes and all. So now there is no much scope for reduction. Only, I mean, as the government is giving subventions and all those things, definitely that is going to help, and rate of interest also is going to come down. As further, I think we are expecting further reduction in the rate of interest. So that definitely is going to help the end user. So there is no much scope for reduction, especially in Hyderabad. और इस बात को मैं ऐसे आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो पंकज जी ने भी बात की और रेड्डी साहब ने भी बात की कि अभी जो प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, और वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो शुरू से अभी ये मोदी रिजिम में बोल रहे हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल, तो जो ये 25 लाख के अंदर वाले मकान है या छोटे टिकट वाले मकान है, उसमें अब हैदराबाद का रुझान कैसा है? क्या ज्यादा डेवलपर्स उनकी तरफ जा रहे हैं, ज्यादा बेनिफिट लोगों को देने की कोशिश है, क्योंकि सारे सबवेंशन, सारी जो सहायता है वो इसी ब्रैकेट में मिल रही है? Yeah, definitely it's not yet picked up actually, but in a small way it has started. क्योंकि कई बार मैंने देखा डेवलपर बचते हैं इस छोटे सेगमेंट में काम करने से. Yes, but affordability में इसमें instead of, I mean, ये LIG का भी है ना, वो 60 square feet का, 60 square meter का, if they increase to 90 square meters, definitely many people will come forward. So ये affordable housing में definitely already prices are low in Hyderabad, but affordable housing mein people are now starting the projects because of the GOs have issued recently. The government has taken decisions. Many projects will come into the affordable housing also. Definitely Hyderabad prices, already affordable with this new scheme and the benefit what the end user is getting. So many projects will come forward. तो वहां पर हम सबसे ज्यादा एक्टिविटी definitely देख सकते हैं. धीरेन्द्र साहब, एक जो सिल्वर लाइनिंग मुझे दिख रही है कि आप ये सबसे नीचे का ब्रैकेट है, ये तो बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन जो मिड ब्रैकेट है और उसको हम देखें कि यहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटी में जंप आया है, आपको लगता है उससे जो मिड सेगमेंट है उसको भी एक बूस्ट मिलेगा? Mid segment across, I think it Hyderabad specific, yes, but even outside the state, mid segment there is always that latent demand. But I think what was lacking for a very long time is the trigger. It has come in a manner which has been a shock to many people. But I think the best thing that has happened is that trigger that is providing through the banking sector, because that's what everybody has been waiting for. And it is more psychological, because the moment it has gone, whether you can call it as a mid-segment, commercial, the moment it crosses 9-10, then the psychology is let's wait and watch. Now even at 8.1, 8.25, we have people who were willing to wait, thinking that it will come further down, go back to that 7.5, 7% era. So the mid-segment, the trigger that was waiting to happen is there. माइया साहब, इंटरेस्ट रेट पे क्योंकि फिर सारा ध्यान लोगों का उस तरफ ही है, तो आपने आधा, मतलब अगर एग्जैक्टली होम लोन की बात करूं 90 बेसिस पॉइंट तो आपका ओवरऑल MCLR रिडक्शन है, लेकिन क्या इसमें और आधा % की नियर फ्यूचर में गुंजाइश बनेगी कि आप उसे किसी तरह 8 के नीचे ले जाएं?
No, I cannot say for sure right now because the rate of interest depends on so many other factors. One is the funds are available with the banks now. Banks have to invest funds. We cannot afford to keep it idle. This is one aspect. Other aspect is that there are other issues like, for example, where I can invest and what is the budget that is going to come up. So there are so many other factors which will come into play. For example, when the demonetization was introduced, the Reserve Bank of India increased the CRR. Now, automatically what happened for about 1 month, whatever money we got, we could not invest. So it has become an idle money. Right. And we are not getting any interest on the CRR even now, though we have been... नहीं, अगर ये CRR जिसकी आप बात कर रहे हैं, बैंक्स भी डिमांड करते हैं और RBI की तरफ से आपको छूट मिल जाती है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे और इंटरेस्ट रेट? Yeah, if the RBI reduces the repo rate again further going forward, definitely that will be going to increase. And the scenario looks like that it is going to reduce. But I cannot say for sure how much it is going to reduce and when it is going to happen. नहीं, वो कहना मुश्किल होगा, लेकिन अगर सिनेरियो देखिए, क्योंकि इन्फ्लेशन के भी आंकड़े लगातार नीचे हो रहे हैं और नोटबंदी के बाद वापस से एक बूस्ट भी देना है सरकार को, पूरी इकोनॉमी को, तो ऐसे पूरे सिनेरियो में लगता तो यही है कि थोड़ा और नीचे आने की going forward the rate is going to come down. The direction is towards that only. राइट. चूंकि बजट की बात की शेखर रेड्डी साहब, बजट है और इस बार फिर बड़ी उम्मीद है कि हाउसिंग सेक्टर को, क्योंकि नोटबंदी के बाद अगेन वी नीड अ बिग पुश इकोनॉमी के लिए, तो हाउसिंग में आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह के अनाउंसमेंट आ सकते हैं, ना सिर्फ लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए बल्कि ओवरऑल बड़े पिक्चर में देखें तो? बेसिकली वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेटस है वो देना चाहिए अफोर्डेबल हाउसिंग को. देखिए कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रामा रेड्डी साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, वो है रियल एस्टेट रेगुलेटर. अब लगभग सभी स्टेट के पास उसका खाका तैयार है. महाराष्ट्र ने तो बाकायदा उसको सामने रख भी दिया है. तेलंगाना में क्या हो रहा है इस समय, क्या आप लोगों ने उसकी तैयारी कर ली है? और आगे आते समय, क्योंकि वो सबको एम्पावर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसपेरेंसी की जो बात कर रहे हैं रेड्डी साहब, उसके लिए तो बड़ा टूल होगा. Telangana mein already government has taken the initiative and already they are discussing with all the developers community like Credai, TREDA, all associations. We had a couple of meetings with the government. We are also internally having a lot of meetings. We have given some suggestions to the government. Government also some areas we have got some consensus. But it's going to be reality. Very shortly they're going to come with a notification. We're expecting it may take. Very shortly it's going to come out. लेकिन सबको ताकत जरूर मिलेगी इससे, और उम्मीद करते हैं कि रियल एस्टेट में बड़ा चेंज आएगा. जिस स्टिग्मा की बात अभी कह रहे थे तो वो हटाने में काम करेगा और सबके काम का होगा. सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं अभी, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये सवाल हमारे दर्शकों में से आने चाहिए. Bankers they have to reduce the margin amount of 10% because the employees right now they don't have money to give the margin amount. How can they'll spend up 10% or 15%, 20%? They don't have that much money to spend on to go and purchase the flats. As far as the margin, you are talking about 10%, 20%, 30%. See, basically there is something called loan to value ratio. This loan to value ratio is prescribed by the Reserve Bank of India. Now there are cases where, especially the low value loan, for example, say up to 20 lakhs, we insist only 10% margin. And as you go up, the margin will increase. So maximum is only 25%. राइट. एक क्वेश्चन सबकी तरफ से मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तो क्योंकि बैंक के पास बहुत पैसा आ गया नोटबंदी के बाद, तो जिसे आप अपनी कॉस्ट ऑफ फंडिंग कहते हैं वो आपके लिए नीचे आ गई, लेकिन अब ये पैसा हमेशा आपके पास रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है. तो क्या जब ये पैसा धीरे धीरे सिस्टम से फिर बाहर निकलेगा तो इंटरेस्ट रेट पर फिर एक प्रेशर आएगा? No, the amount of cash what we got is substantially very huge. Now therefore it will take some amount will definitely go, and how much will go, how much will happen, what will happen in the future, we have to wait and see. We cannot immediately come to any conclusion. और अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस समय हमारा समाप्त होने जा रहा है, तो मैं सबकी तरफ से पूछ लेता हूँ. वो ये है, एक इधर से और एक पैनलिस्ट इधर से लूंगा. पहले आपसे ले लेते हैं कि बजट अब 1 तारीख को ही है. इंटरेस्ट रेट के लिए बहुत सारे स्पेकुलेशन है, कम होगा नहीं होगा, आरबीआई क्या करता है. ऐसे में खरीदार बड़ा कंफ्यूज है. उसे थोड़ा रुक जाना चाहिए घर खरीदने के लिए या डिसीजन ले लेना चाहिए? जरूरत नहीं. See, always is a floating rate. They can consumer can go back to the bank and can shift that. Is not a issue. Only कम होने तक रुकना बोल के जरूरत नहीं है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का बारे में सब लोग का है
definitely और भी कम हो जाएगा. When it's in a floating rate, definitely it's not going to have a major impact. So, I mean, it's not, budget is not very far. Yes, it's very only 10-12 days. I mean, so people, they may wait for maybe another 2 weeks time. So after that they have to take a decision. Dharmendra sahab, we have a lot of expectation. Like everybody else, we hope that the GST doesn't get postponed even further. Big expectation. इसको पूरी बात को समाप्त करने के लिए क्या रुकें या आगे बढ़ जाएं? देखिए, मैं तो नहीं कभी कहता हूं कि कोई भी समय बुरा होता है, और आज शायद हम इकोनॉमिक हार्मोनिक वाली सिचुएशन में पहुंच रहे हैं, तो आज तो बिल्कुल खरीदने का समय है. गोइंग फॉरवर्ड, तो आई थिंक द बेस्ट टाइम इज अराइविंग. राइट. तो आई थिंक, लेकिन जो भी मोटा मोटा पूछना चाह रहे थे उसका जवाब इस बातचीत में आया होगा. तो टाइम आ रहा है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आगे की जो पॉलिसीज हैं वो इस तरीके से होंगी जिसमें हम एक ओवरऑल पिक्चर बात कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपर भी और खरीदार भी दोनों एक ही पिक्चर के दो अलग अलग चीजें हैं, और दोनों को जब तक एक आपस में बैलेंस नहीं होता है, जिसमें डेवलपर को भी अपना काम करने का मौका मिले और घर खरीदार को अपने राइट्स मिले, सही कीमत मिले और अच्छी क्वालिटी मिले, यही कोशिश रहती है. तो उम्मीद करते हैं कि आगे जो पॉलिसीज आएंगी, जो बजट आएगा और जो बहुत कुछ हो रहा है इस समय देश के अंदर, वो सब फेवर करेगा कि आगे चलते हुए आपको अपने सपनों का घर मिले, वो भी सही कीमत और सही क्वालिटी पे, सही वक्त पर. तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद करते हैं और आप सभी लोगों का भी जो यहाँ पर आए और इतने धैर्य के साथ हमारी ये बातचीत सुनी. नमस्कार. Focus, ideate, innovate, enable.